गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ब्रू रिफ्यूजीज़। तो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जो है रिहैबिलिटेशन के लिए ब्रू रिफ्यूजीज़ के लिए जो है लैंड जो है एलोकेट कर दिया है। लास्ट बैच ऑफ मिज़ोरम के ब्रू रिफ्यूजीज़ जो हैं वो रिहैबिलिटेट किए जाएंगे। तो इसके साथ ही जो सेटलमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो ब्रू जो है इनको हम रियांग भी कहते हैं। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और ये मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम में हिस्टोरिकली रिज़ाइड करते थे। ठीक है, इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का जो है स्टेटस भी मिला हुआ है। बहुत से जो ब्रूज ऑफ असम जो है और त्रिपुरा के जो हैं वो हिंदूज़ हैं, लेकिन जो ब्रूज ऑफ मिज़ोरम है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस तब शुरू हुआ जब लगभग 2 डेकेड्स पहले जो है मिज़ोरम जो उनका होम था वहाँ से इनकी एथनिक परसिक्यूशन शुरू हुई। 1995 के आसपास जो है ब्रूज़ को एलिमिनेट करना शुरू किया गया मिज़ोरम के इलेक्टोरल रोल से। टेंशन्स एस्केलेट हुई जब मीज़ोस ने जो है अटेम्प्ट किया कि उनकी जो है राइट टू वोट उनका छीन लिया जाए। तो उसी को ही जो है अगेंस्ट वो ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट में वो अपने आप को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और सेपरेट ब्रू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वेस्टर्न मिज़ोरम में डिमांड करना शुरू किया। लगभग 35,000 रियांग्स जो हैं करंटली नॉर्थ त्रिपुरा के कंचनपुर कैंप में रहते हैं। उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए ही जो है ये सब किया जा रहा है। अब अटेम्प्ट जो है रीसेटल करने का ब्रूज़ को वो कई बार किया गया है। जैसे 2018 में एक क्वाड्रीपार्टाइट पैक्ट मतलब कि 4 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ त्रिपुरा, मिज़ोरम, सेंट्रल गवर्नमेंट और ब्रू रिफ्यूजीज़ के बीच में। और 2020 का जो एग्रीमेंट था इसमें जो है स्टेट ऑफ त्रिपुरा भी जो है इन्वॉल्व हुआ और स्टेट ऑफ त्रिपुरा में ही इनको जो है वो शामिल करने का फैसला लिया गया। ब्रू फैमिलीज़ को एक रेजिडेंशियल प्लॉट, फिक्स डिपॉजिट 4 लाख का, 1.5 लाख ग्रांट ताकि वो अपना घर बना सकें, फ्री राशन और मंथली स्टाइपेंड 5,000 रुपीज़ 2 ईयर्स के लिए देने का इसमें प्रोविज़न था। और उनको जो है डिस्प्लेस्ड रियांग्स को इलेक्टोरल रोल्स ऑफ त्रिपुरा में भी जो है वो शामिल करने का फैसला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए और सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया का कंटेक्स्ट ये है कि नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में कहा गया है कि 4.82 करोड़ पीपल जो है पिछले 9 साल में जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एस्केप कर चुके हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम की वजह से ही आप पुअर होते हो, बट पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क और लिटल स्कूलिंग, बेसिकली ये मल्टी डायमेंशनल तरीके से ही जो है कोई पर्सन पुअर होता है। ठीक है, कई तरह की डेप्रिवेशन से सफ़र कर रहा होता है वो, एजुकेशन की, एक्सेस टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसलिए हम सिर्फ अगर इनकम का क्राइटेरिया लेंगे तो हम रियलिटी नहीं पता लगा पाएंगे पॉवर्टी की। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो नीति आयोग ने बनाया। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको कंसिडर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो नीति आयोग ने 2021 से इसको पब्लिश करना शुरू किया। पहला एडिशन जो है वो 2021 में आया और इसमें इन डेप्थ एनालिसिस किया गया नेशनल, स्टेट, यूटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर। डेटा कहाँ से लिया गया? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से। अब इसमें कई पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। 12 इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं इसको प्रिपेयर करने में। ऑफ कोर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वो। अगर हम रिपोर्ट्स के हाईलाइट देखें तो 17.89 परसेंटेज पॉइंट्स जो है वो हमको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है रिडक्शन उसमें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे तेज़ी से जो है ये लोगों ने पॉवर्टी को एस्केप किया है। ठीक है, इंडिया जो है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट नंबर 1.2 है, जिसमें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लगभग हाफ तक कम करना है 2030 से पहले। इंडिया उसको अचीव कर सकता है, ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट ने जो है गोल तो ये रखा है कि वो जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को 1% से भी कम में जो है वो लेकर आएँ। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इंडिया जो है सिंगल डिजिट पॉवर्टी लेवल्स 2024 तक जो है वो रीच कर लेगा। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त अभियान, फिर जो टारगेटेड पीडीएस जिसमें 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज़ को फूड जो है मिल रहा है, उसकी वजह से जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो कम होने को हमको देखने को मिल रही है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अपना 6th बजट इन अ रो जो है वो पेश करने वाले हैं। ये इस बार जो है इंटरिम बजट होगा, या जिसको वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, रेगुलर फुल बजट तो तभी आएगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? तो इंटरिम बजट तो वही होता है कि जब इलेक्शन का साल है तो नवी गवर्नमेंट आएगी, वो असली बजट देगी ना। तो जब तक वो नवी गवर्नमेंट नहीं आती तब तक के पीरियड के लिए तो कुछ पैसा चाहिए, है ना, तब तक तो बजट गवर्नमेंट का चाहिए। तो उसको हम कहते हैं इंटरिम बजट। ठीक है, तो जनरली ये दो जो है 2 महीने के आसपास का जो है ये टाइम पीरियड होता है, जिसके लिए जो है पैसा चाहिए होता है, खासकर अप्रैल मई तक के लिए पैसा चाहिए होगा, और उसी को हम जो है ये इंटरिम बजट कहते हैं। अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? अब उसको हम डिफरेंस समझेंगे इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट का। वोट ऑन अकाउंट तो है वो आपका जैसे नॉर्मल बजट होता है, उसी को आप मान लो, आई एम सॉरी, इंटरिम बजट तो क्या होता है, जैसे आपका जो रेगुलर बजट होता है उसी का ही बस आप शॉर्ट वर्जन समझ लो, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो उसको हम इंटरिम बजट कहते हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ ऐसी अनाउंस नहीं की जा सकती पॉलिसीज जो कि लोगों से वोट कैच करने के लिए की गई हों। ठीक है, अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वो इंटरिम बजट का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसी के फ्रेमवर्क के अंदर ही होता है वो, और वो सिर्फ एक तरह से एक एक्सपेंडिचर के लिए पैसा मांग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट से। वोट ऑन अकाउंट क्या कहता है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए विदड्रॉ करने के लिए मनी। जब तक आप प्रॉपर बजट नहीं ले आते तब तक तो हमें खर्चा चलाना है ना, अप्रैल से जून तक के पीरियड के बीच में। तो आप जो है हमें उसके लिए जो है उसके ऊपर कोई वोटिंग भी नहीं होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को आउट ऑफ फेथ जो है वो पैसा दे दिया जाता है पार्लियामेंट से अप्रूव करके। जब तक बजट फुल बजट नहीं आता, फुल बजट के ऊपर जो है इंटरिम बजट के ऊपर भी वोट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो इंटरिम बजट जो है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, जब तक ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नहीं आ जाती दूसरी। और वोट ऑन अकाउंट जो है वो सिर्फ 2 या 4 महीने के लिए वैलिड होता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कावेरी बेसिन। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट्स को नोटिस दिया है IAS की रिपोर्ट पर, जिसमें कि ये हाईलाइट किया गया है कि मैसिव रिडक्शन ऑफ ग्रीन कवर जो है हुआ है कावेरी बेसिन में पिछले 5 डेकेड्स में। कावेरी बेसिन जो है वो कावेरी रिवर जो है आपकी तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी से गुजरती है। वेस्ट में इसके वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्ट में इसके ईस्टर्न घाट्स हैं ऑफ कोर्स। और इसकी जो है एलिवेशन अगर हम देखें तो 1341 मीटर्स है। तलकावेरी ब्रह्मगिरी रेंज के पास में से है, गुजर निकलती है ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। तो प्रिंसिपल सॉइल्स जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इसके बेसिन में वो है ब्लैक सॉइल्स, रेड सॉइल्स, लेटराइट्स, एलुवियल सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स और मिक्स सॉइल्स। जो नेशनल पार्क इस बेसिन में पड़ते हैं वो हैं बांदीपुर, नागरहोल और बानरघाटा नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो थिक मिस्ट जिसकी वजह से जो है फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो हैम्पर होते हैं, उससे डील करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल फॉग बहुत बढ़ रही है, तो ये इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बेसिकली एक ग्राउंड बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है पायलट्स को एयरक्राफ्ट की पोजीशन के बारे में और रनवे की अलाइनमेंट के बारे में। तो जो है इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक लोकलाइज़र और एक ग्लाइड स्लोप। तो बेसिकली ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की जो है वो एक्सिस को कवर करता है और एयरक्राफ्ट की पोजीशन बताता है एयरपोर्ट रनवे के हिसाब से, विदाउट द पायलट को फिजिकली उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब। ठीक है, पायलट्स को जो है वो वॉर्न भी कर देता है अगर बहुत पास में चला जाए जेट रनवे के, या फिर बहुत ऊंचा हो जाए। ठीक है, तो उस केस में भी जो है हेल्प कर देता है। लेकिन आजकल मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो हैं ILS के अलावा और भी एडवांस्ड एवियोनिक्स और ऑटो पायलट सिस्टम्स के साथ आ चुके हैं ताकि आसानी से वो फॉगी लैंडिंग्स कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि यूज़र्स को कहेगा बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करने के लिए किया गया है, कि जिसमें नो योर कस्टमर प्रोसेस बाय जनवरी 31 तक करवा लीजिए, वरना आपके जो है फास्टैग को डीएक्टिवेट कर लिया जाएगा। बेसिकली क्या देखा गया था कि कई जो है
व्हीकल्स, मल्टीपल व्हीकल्स का एक ही फास्टैग लिया हुआ था लोगों ने, तो उसके लिए जो है केवाईसी इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। फास्टैग क्या है? रेडियो आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID टैग, जो कि पेमेंट जिसके थ्रू आप डायरेक्टली कर देते हो जब चाहे व्हीकल मोशन में भी हो, है ना। तो टोल फेयर जो है डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है जो प्रीपेड बैलेंस में से, और जो फास्टैग है उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गट माइक्रोबायोटा। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि गट माइक्रोबायोटा जो है वो हार्ट हेल्थ, कई फॉर्म्स ऑफ कैंसर और इवन कलर ऑफ यूरिन को भी अफेक्ट करता है। तो गट माइक्रोबायोटा जो है वो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब जो हमारे गट में रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, फंगी, पैरासाइट्स और कई तरह के जो है पैथोजेंस जो आपके ह्यूमन गट में रहते हैं। तो इन्फेंट्स जो हैं वो तो ब्रेस्ट फीडिंग से या वेजिनल डिलीवरी के टाइम पर जो है वो फर्स्ट गट माइक्रोब्स जो है अपने बॉडी में लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ओवर द टाइम अपनी डाइट से और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स जो है उसके थ्रू माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आते हैं। तो ये गट माइक्रोबायोटा जो है वो हमारी बॉडीली फंक्शंस को भी जो है चलाने में हेल्प करता है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकालना, पैथोजेंस से प्रोटेक्शन देना, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, बायोकेमिकल बैरियर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना गट और इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन अगर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला जाए तो इन्फेक्शन भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स ये, जैसे फूड पॉइजनिंग, अदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसीज़ेज़, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, क्रॉन डिसीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ही जो है ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज अयोध्या। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मेडन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अयोध्या बिटवीन इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी जो है वो कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज अयोध्या जो है ये, इसको हम द इनविंसिबल वन या अनडिफिटेबल भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब मेडन एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और थाईलैंड, और ये ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ अयोध्या इन इंडिया और अयोध्या इन थाईलैंड, इन दोनों के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज की जा रही है इसमें सरफेस और एंटी एयर एक्सरसाइजेज भी जो है वो की जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फारसी लैंग्वेज। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि फ़ारसी या फिर पर्शियन, उसको भी वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में बनाया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। फ़ारसी लैंग्वेज जिसको पर्शियन लैंग्वेज भी कहते हैं वो ईरानियन ब्रांच है इंडो अरानियन लैंग्वेजेस की, सब फैमिली है, एक सब फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान भी है, और इसकी दो वैरायटीज़ हैं पर्शियन की, दारी और तजीक, जो कि अफ़गानिस्तान और तजिकिस्तान के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फ़ारसी स्पीकर्स जो है वो अदर पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। 62 मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं इसके, और इसको अरेबिक स्क्रिप्ट में जो है लिखा जाता है, और कई तरह की हमारी नदर्न इंडिया की जो है लैंग्वेजेस भी जो है वो इसकी रिलेटिव्स हैं। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस इंडिया में क्या है? तो अगर क्राइटेरिया देखें किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का, तो जैसे हमने अभी बंगाली के बारे में देखा था कुछ दिन पहले, तो बेसिकली रिकॉर्डेड हिस्ट्री या इसके जो टेक्स्ट हैं वो 1500 या 2000 साल पुराने होने चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए जनरेशन से ये स्पीकर्स की, लिटरेरी ट्रेडिशन जो है इसका ओरिजिनल होना चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए मॉडर्न जो है लैंग्वेज से। करंटली 6 लैंग्वेजेस जो है उनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। अगर जो है फ़ारसी जो है वो ऐड हुई तो वो ऑफ कोर्स 7th लैंग्वेज होगी। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is brew refugees. So Tripura government, this topic is of course important for your social issues. So Tripura government has allocated land for the rehabilitation of the last batch of Mizoram Bru refugees. So the settlement process will now be complete after this rehabilitation. So Brus are also referred to as Riangs. So basically they are a tribal community which who are indigenous to northeast India. They historically resided in parts of Mizoram, Tripura, and Assam, and they are designated as the particularly vulnerable tribal group in the state of Tripura. While many Brus of Assam and Tripura are Hindu, some of them, like the Brus of Mizoram, they converted to Christianity over the years. The Bru Riang
refugee crisis began when in 1995 different groups in Mizoram demanded that Brus be eliminated from the Mizoram's electoral rolls, and the tension started escalating when the Brus retaliated against the Mizos' attempt to disenfranchise them. So they organized themselves into an armed group called the Bru National Liberation Front, and they started demanding the creation of a separate Bru Autonomous District Council in Western Mizoram. So about 35,000 Ryangs continue to reside in North Tripura's Kanchanpur camp, as per Home Ministry's estimates. So attempts to resettle them have also been made in previous times also. So, like for example, in 2018, a quadripartite pact was signed between Tripura, Mizoram, and central government. Of course, the fourth partner was Brus themselves, regarding the resettlement of refugees from Mizoram. The four groups in 2020 signed the pact in Tripura, and the Bru families were promised a residential plot, a fixed deposit of 4 lakh rupees, 1.5 lakh grant to construct their houses, free ration and monthly stipend of 5,000 rupees for a period of 2 years. Additionally, the 2020 pact also promised them to include these displaced Ryangs in the electoral rolls of Tripura. Okay, so the next topic is multidimensional poverty in India. This topic is important for your social issues. So, as per Niti Aayog's discussion paper, multidimensional poverty in India since 2005-2006, about 24.82 crore, about 25 crore people have escaped uh, multidimensional poverty in the last 9 years. Okay, during the reign of current government. So, multidimensional poverty is basically an acceptance of the fact that a person is poor and he or she can suffer multiple disadvantages at the same time. So it is not just income factor, but a person may have poor health or malnutrition, lack of basic infrastructure. So basically we are capturing deprivations in education, access to basic infrastructure, among many other, because income is not a sufficient criteria to measure the poverty. Okay, so MPI has been used by United Nations Development Program also in its flagship Human Development Report since 2010. Also, Niti Aayog developed this first edition of National Multidimensional Poverty Index for India in 2021. So it gave an in-depth analysis of headcount ratio and intensity of multidimensional poverty at national, state, UT, and district levels. Okay, so this first report was prepared on the basis of National Family Health Survey data for 4. Okay, so the methodology, you do not need to remember it, but generally it takes about 12 indicators and uses the Alkire-Foster methodology of weighted dimensions to measure it. Okay, so what are the key highlights of this report? So we have seen between this last 9 years a 17.89 percentage point reduction in the total people who have exited multidimensional poverty. Uttar Pradesh has seen the steepest decline in people who have escaped poverty. India is also likely to achieve the SDG target 1.2, which basically aims to reduce multidimensional poverty by at least half before 2030. But government has set a very ambitious goal of bringing this down to 1%. Okay, and the government is the report is also saying that India is set to reach this single digit poverty levels during 2024. So report has also highlighted that initiatives like Poshan Abhiyan, Anemia Mukta Bharat, and the largest targeted public distribution system, which covers 81.35 crore beneficiaries, have contributed to this achievement of people exiting multidimensional poverty. Okay. So the next topic is interim budget and vote on account. This topic is important for your polity section. So finance minister is set to present her sixth budget in a row, and since this is a general election year, government will be allowed to only present an interim budget or vote on account instead of a regular full budget. So interim budget serves as a framework for managing provisional expenditures over a very short duration, because until a new government takes office, the full budget cannot be presented. So vote on account is different from interim budget, even though it is part of interim budget. So
Like a regular budget, interim budget is subject to constraints imposed by the Election Commission also. It accounts for expenditures to be borne by the outgoing government for a period of 2 months, but vote on account, it can approve within the framework of the interim budget also. Vote on account is basically the government seeking parliamentary approval for withdrawing money from the consolidated fund of India every year from April to June period, or like in this year when the new government will be presenting its full-fledged budget. Okay, so it is kind of an advanced grant. Until the budget has not been passed, government requires some money, okay, to run its operations. So for that, vote on account is passed. Okay, interim budget is valid throughout the year. And vote on account is valid only for a period of 2 to 4 months until the budget gets passed. Okay, so the next topic is Kaveri Basin. This topic is important for your environment section. So National Green Tribunal has served notices to Karnataka, Tamil Nadu and Kerala government based on report by IISC, which has highlighted that there has been massive reduction of green cover in Kaveri Basin over the past 5 decades. Kaveri Basin is bounded by the Western Ghats on the west and Eastern Ghats on the east. It extends over states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and Union Territory of Puducherry. It rises in Talakkaveri in Brahmagiri range near Chirangala village of Kodagu district of Karnataka. The principal soil types here are black soils, red soils, laterites, alluvial soils, forest soils, and mixed soils. And certain national parks are also located in this basin, like the Bandipur National Park, Nagarhole National Park, and the Bannerghatta National Park. So the next topic is instrument lending system. This topic is important for your science and tech section. So thick mist, which hampers flight operations, has necessitated the reliance on instruments like instrument landing system, which can help the aircraft operators, the pilots, to navigate through foggy weather. Okay, so basically it's a ground-based radio navigation system which provides pilots with accurate information about the aircraft's position and alignment with the runway. It comprises of two main components, the localizer and the glide scope. The localizer ensures lateral alignment and the glide slope provides vertical guidance. Okay, it guides pilots along both horizontal and vertical axis, and basically it enables the pilot to understand how their aircraft is positioned with respect to an airport runway without needing to physically see it. It will also warn pilots in case their jets are too low or too high. And in addition to ILS, modern aircraft are also being equipped with advanced avionics and autopilot systems, which enhance precision during foggy landings. So the next topic is One Vehicle, One Fast-Tag initiative. This topic is important for your uh, economy section. So recently, National Highways Authority of India has launched this One Vehicle, One Fast-Tag initiative, which basically aims to complete the Know Your Customer service process by the end of 31st January for users so that they can avoid deactivation. So why it is being done? Because it was seen that a particular behavior was seen where people were using a single fast tag for multiple vehicles. Okay, so the aim is to, of course, enhance the efficiency of electronic toll collection system. So what is FASTag? FASTag basically employs a radio frequency identification or RFID technology, so as to directly deduct the toll fare from the linked account of the customer. FASTag can be purchased from any of the national electronic toll collection member banks. Okay. So the next topic is gut microbiota. This topic is important for our environment section. So scientists are finding that gut microbiota may be linked to heart health, some cancers, and even the color of urine. So gut microbiota refers to the trillions of microbes like bacteria, viruses, fungi, and parasites which live in the human gut. And people refer to gut microbiota as the microflora of the gut. And infants inherit their first gut microbes during vaginal delivery or breastfeeding. Later, the diet can and other environmental exposures introduce new microbes to your biome. So the gut microbiota assists in a range of bodily functions, including harvesting energy from digested food, protecting against pathogens, regulating immune function, and even strengthening the biochemical barriers of the gut and intestine. Okay, so
It is beneficial, but it can become harmful if it somehow enters the gastrointestinal tract, and it so that because it can cause infection like food poisoning and other GI diseases like inflammatory bowel disease, Crohn's disease, and ulcerative colitis also. But also, low microbial diversity in the gut also has links to obesity and type 2 diseases. I'm sorry, type 2 diabetes. So the next topic is exercise Ayodhya. This topic is important for your security section. So recently maiden bilateral maritime exercise Ayodhya between Indian Navy and Royal Thai Navy was conducted. So this has been named as exercise Ayodhya, which means the invincible one or the undefeatable. So it symbolizes the significance of the two oldest cities of Ayodhya in India and Ayodhya in Thailand. So this maiden exercise involved both navies who conducted the surface and anti-air exercise also using weapon firing, seamanship evolutions, and tactical maneuvers. So the next topic is Farsi language. This topic is important for your art and culture section. So External Affairs Minister has recently announced that Government of India has decided to include Farsi or Persian as one of the classical languages in India. So Farsi language is also known as the Persian language. It is the most widely spoken member of Iranian branch of the Indo-Iranian languages, and which is a subfamily of Indo-European languages. It is the official language of Iran, and two varieties of Persian known as Dari and Tajik. They are also the official languages of Afghanistan and Tajikistan, respectively. Significant populations of Farsi speakers can also be found in other Persian Gulf countries and large communities in US as well. So about 62 million native speakers exist of Farsi language, and Farsi in Iran is written in a variety of Arabic script. The relatives of the language, its relatives are the languages of northern India also, and even some major European languages, including English. So, what is the status of classical languages in India? So, the criteria adopted by Government of India to determine the declaration of a language as a classical language include high antiquity or of its early text or recorded history over a period of 1500 or 2000 years. It should have a body of ancient literature or text which is considered a valuable heritage by generations of its speakers. It should have a literary tradition that is original and are not borrowed. It should have a classical language and literature which is distinct from modern language. Okay, currently six languages enjoy the classical status in India: Tamil, Sanskrit, Kannada, Malayalam, and Odia. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.